Dear students, population is a demographic variable, but it has meaningful implications for economic variables. Let us see how we can analyze population by using differential equations. So the dynamics of population are to be observed here, and for that we are considering that population is represented with the help of variable n, and its value currently is 5 million. So it is the initial condition, as we can already guess that the initial condition of population is 5 million, and it is expected to that the population will grow accordingly to the differential equation this. So here we are told that this is the rate of change by which the population will increase over time. As you can see, dt shows over time and n shows the population. So now after understanding that it is dependent upon time, where it is measured with the in terms of years, let us see how we can solve it. As we are already told that the initial condition is at the level of 5 million, so the population initially is this, and this is that equation which is going to help us to develop the time path for population. So let us borrow this given equation and let us rearrange it to get the standard form, and then to extract the values of small a and small b. As you can see, we have already shifted this term from right hand side to the left hand side. Now it's minus, so ये minus हमारे पास आ गया, and we have extracted it separately from the plus, so that हम इसे जब standard form से compare करें तो हमारे पास a की value भी आ जाए और small b की भी value आ जाए. You can see clearly कि a की value हमारे पास आ गई और b की value भी हमारे पास आ गई. So in place of y we have n, which is showing population. ये वो सारी values हैं जो कि अभी हम extract कर चुके हैं. You can pause the video and see. Now these are the various values that we have. One is b and the other is a. We know that we start with the value of b to find out if we are dealing with a homogeneous case or a non-homogeneous case. So b already is known to be 0 in this case, so we are dealing with the homogeneous case. So a is equal to this, which is a negative value, which is not equal to 0. So we can say that a is not equal to 0 and b is equal to 0. So definitely it's a homogeneous case that we are dealing with. And for the formula for this homogeneous case would be this. हम already ये formula पढ़ चुके हैं. Homogeneous case के लिए हम इस formula को use करते थे. So emphasize किया कि हम इसमें small a की value लगाएंगे, y naught की value लगाएंगे और y की जगह भी replacement करेंगे. So as you can see, y की जगह n आ गया और y naught की जगह n naught, which is the initial condition of population, और a आ गया हमारे पास इधर जो कि value है of the coefficient of variable n. अब इनको हम जब solve करेंगे हमारे पास finally ये चीज़ आ जाएगी, which is a very simple thing, और इसे अब हम interpret करेंगे for its dynamic stability, because we want to know if this time path is moving towards the equilibrium or away from it. और उसमें जो स्टैंडर्ड थ्योरी है उसकी ऑलरेडी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ और वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इन लाइंस में यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो अहम बताई गई है वो ये है कि NP इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स कि जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है इन दिस केस इट इज़ इक्वल टू 0, एंड दैट शुड नॉट बी अ सरप्राइज, बिकॉज आपको पता है कि जब होमोजीनियस केस को हम डील कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 के बराबर ही होता है. सो विद दैट इन माइंड वी आर गोइंग अहेड. सो हमने रीराइट किया इस फंक्शन को जो कि हमने अभी डेवलप किया था, जो टाइम पाथ है, और उसमें हमने फोकस किया a के ऊपर. सो a एंड डेफिनेटली द होल एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो कि फाइनली हमें बताएगा कि एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है. तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि NC जो है, इज़ इट मूविंग, इज़ इट रिड्यूसिंग और इज़ इट इंक्रीजिंग, इज़ देयर डिके और इज़ देयर एक्सपेंशन और ग्रोथ. सो ये आपको पता है ये डेविएशन वाला हिस्सा होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर टाइम. और ये ग्रोथ इसलिए है बिकॉज आपने देख लिया है कि जो R की वैल्यू है जो कि T का कोफिशिएंट है इट इज़ पॉजिटिव. सो इट मीन्स के एक्सपोनेंशियल डिके के बजाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, which shows that there will be divergence from away from the equilibrium and the time path is dynamically unstable. Now you can see that this is the graph that is showing the whole situation.
time is plotted on x-axis because that's the independent variable, and nt is the dependent variable, that is the population. You can see population is increasing at an exponential rate, and that is true in many, especially the developing countries. जो population का growth rate होता है, that is usually high, maybe exponential in some cases. So आप you can see that it's there, और ये है starting point. यहाँ पर जो values हैं, these are negative values, and definitely we don't consider them because we are talking about a demographic variable that has economic importance, and that is likely to be positive. Population is not negative. So हमने दोनों possibilities को plot किया, और हमने देखा जो हमने time path develop किया, it is right because it is moving away from the equilibrium point, which is here at the x-axis, क्योंकि यहाँ पर particular integral exist कर रहा है np, and that was equal to 0 because of the homogeneous case that we are dealing with. So graphically it is also visible that we are having a divergent case, and the time path is dynamically unstable. So policy problem भी हम इससे कर सकते हैं because population is an important policy variable, और उसके लिए हम what we can see here is ये हमें एक point दिया गया है जहाँ पर हमने figure out करना है कि situation क्या है. So it is usually important, जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि important variable है. Population will take to get double. Population कितने दौरानिये में double होगी? That's something very important. We usually want to know this thing. तो इसके लिए अब हम जो स्टेप करने जा रहे हैं उसमें हमने इस सोल्यूशन को जो हमने अभी डेवलप किया था उसको नोट किया, और डेफिनेटली हम उसके अंदर जो टाइम है उसे हमने अब फिगर आउट करना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा. तो इसलिए आप देख रहे हैं उसे हमने एक स्पेशल नोटेशन दे दी है, दैट इज़ कैपिटल टी. अब ये स्मॉल टी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एनी वैल्यू ऑफ टी, इट इज़ अ स्पेशल वैल्यू ऑफ टी जहाँ पर पॉपुलेशन डबल हो जाएगी. फर्दर जो है हमारे पास सिर्फ सब्सटीट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन है. ये स्टेप आप देख रहे हैं, इट इज़ द सेम. हाउएवर एन टी की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी है, एन टी द पॉपुलेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ये ट्वाइस है. अगर आप देखें इनिशियल कंडीशन थी 5 मिलियन, तो ये है 10 मिलियन, राइट. यू कैन सी इट इज़ 10 मिलियन, क्योंकि हमने ऐसी पॉपुलेशन को ही पहुंचना था जो कि ट्वाइस है. सो द इनिशियल लेवल वाज 5 मिलियन और इसकी 2 गुना होगी 10 मिलियन. वो यहाँ पर लिखी हुई है, और ये हमने इसकी जगह पे लिखी ताकि हम वो पॉइंट ऑफ टाइम निकाल सके जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी हो. सो ये आप देख सकते हैं कि हमने टी की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन डू दैट एक्चुअली, बट यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप है, और आपको पता है एक्सपोनेंट आ गया. एक्सपोनेंट से जान छुड़ाने के लिए वी सिंपली टेक द नेचुरल लॉग, और अगले स्टेप में आप देख रहे हैं वही हमने किया हुआ है, और हमारे पास जो कैपिटल टी है उसकी सर्टन वैल्यू डिराइव होने जा रही है, विच इज़ 46.2, एंड दैट इज़ इन ईयर्स. क्वेश्चन के शुरू में हमें बता दिया गया था. सो नाउ वी हैव दिस सिचुएशन जहाँ पर हमें पता है कि इट विल टेक 46.2 years till the population will get double. So in this way the policymakers can take help from differential equations to assess one of the demographic variables which has important economic implications, that is population. Thank you.